Assalamualaikum dears. This is your Nazia ma'am. Hope you are doing good. Alhamdulillah. A very good morning to you. So we completed Alhamdulillah the EVS portion. The two units are remaining. We'll see it later. Okay. So now we again shifting to our allied subject, that is literary forms and terms. So under that unit 2 we successfully completed unit 1 Alhamdulillah, and now we are going to see the next unit 2. Under that, lyric poetry. So first, you people know what is lyric. You must know that what is lyric, how the lyric poetry is used in the literature, and who are all the writers, and what are the qualities of lyric, and how lyrics can be written. Okay, so we are going to see now the small definition of lyric. See, the picture itself shows the lyric poetry. So what is the lyric poetry? You understand, yes, with the help of pictures you try to understand. So it shows the expression human emotions and feelings. So a poem has been written and it was a music was added. Poem plus music gives lyric poetry. So a poem is there. If you are giving music to that poem, it's a lyric poetry. So where it originates? It originates from the Greek lyre. So see, whenever you write about the literary forms and terms in your exams, you have to write about the origin, from where it starts. Origin means from where it started. So again I am repeating, lyric poetry defined as expression human emotions and feelings. So you are seeing in the picture that a person was sitting and he was playing something, singing something with the music. A poem is there and the person was adding music to that poem is lyric poetry. So in Urdu, लिरिक पोइट्री वो होता है जो अपने अंदरूनी हालात को ज़ाहिर करता है, जैसे कि हमारे अंदर के इमोशंस, हमारे अंदर की फीलिंग्स. तो आई थिंक यू नो कि जो भी हम सोचते हैं, अच्छा जो सोचते हैं, अगर हम लोगों को इमोशन होना है, जैसे कि हम लोग अंदर से खुशी जाहिर, जैसे कि खुशी या गम जाहिर करना, उसको फीलिंग्स बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं. सो whenever we expresses the emotions, feelings is lyric poetry in the form of music. So हम लोग जो हमारे खुशी या गम जाहिर करते हैं उसको एक गाने की शक्ल देते हैं, उसमें म्यूज़िक को ऐड करते हैं, वो लिरिक कहलाता है. ठीक है. एंड कहाँ से ये ईजाद हुआ, ये किधर से आया जो लिरिक बन के हम पढ़ते हैं इसको. सो कहाँ से इसको पहचाना गया कि ये लिरिक है, इसको नाम दिया गया, तो ग्रीक से दिया गया और वो ग्रीक वर्ड है लायर. सो पहले एक लायर, उसके बाद ये लिरिक बना. सी, ये लिरिक पोइट्री, हाउ द लिरिक पोइट्री वॉज. अ पॉपुलर डॉक्यूमेंट इज द मोनार्ची अलाउड मेन फ्री एक्सप्रेशन. जो भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हमारी खुशी, हमारा गम, हमारी ख्वाहिशात, हमारी जो भी, अगर हम लोग कुछ पाना चाहते हैं तो उसको भी हम गाने की शक्ल दे सकते हैं. सो दिस इज़ अ प्री होमेरिक एज. सो लिरिक कैसा होता है, ये पिक्चर आपको समझ में आएगा कि लिरिक क्या होता है. सो देखिए, इसमें एक इंसान एक तरीक़े से डांस कर रहे हैं. कोई डांस कर रहे हैं, कोई हाथ पैर हिला के बोल रहे हैं, कोई खड़े होकर बोल रहे हैं. सो एवरीबडी वॉज एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, whether they are sad, whether they are happy, somehow they are expressing their feelings.
विद अ फ्रीनेस. सो फ्री होकर अगर जैसे कि हम लोग अगर कभी इफ़ वी आर हैविंग लिटिल बिट मूड ऑफ, so what we do, we want to be alone at that time. So it depends upon the mood also. We can sing, we can dance. So the total lyric poetry deals about human expression and human feelings and emotions. It may be in a free form. There is no restriction के ऐसे होना है, वैसे ही गाना है, ऐसा नहीं है. No restriction. They can explore their feelings in the form of dance, in the form of music, or in the form of song. Okay. See, the lyric poetry elements. What are the elements here which has been hidden? So I have shown you many pictures, dear. See, I have shown you many pictures. Every picture says you something. You try to understand about this lyric poetry. So the elements. What are the elements? What can be in the lyric poetry? So lyric speaker. How the lyric speaker says, a person who expresses feelings. So see, there are three pictures, so you can see in that picture what is lyric. Some is standing and some is sitting sad and thinking, and someone is meeting somewhere and they are showing their emotion. Somebody was playing music. So motive. सो सम मोटिवेशन भी होता है, जैसे कि सिचुएशन इवेंट्स विच स्टिमुलेट्स द फीलिंग बेस्ड अपॉन द सिचुएशन. यू कैन सिंग इफ इट इज़ अ बर्थडे सॉन्ग, यू कैन सिंग अ बर्थडे सॉन्ग. इफ इट इज़ अ funeral, you can sing a funeral song. If it is a wedding day, you can sing a wedding song. So based upon the situation, okay, and based upon the mood, speaker's emotion, as I have already told you, the feelings and emotions was filled in the lyric poetry. The topic is, the main idea has to be inculcated, the main idea has to be so told by the speaker. It has to be said in such a way that the reader can understood, the audience can understood what the lyric speaker wants to say as about his feelings, about his emotions. तो लिरिक पोइट्री के एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो लिरिक स्पीकर है, जो लिरिक पढ़ते हैं, वो पर्सन्स के फीलिंग्स को बताता है. वो एक सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि अगर शादी का गाना है तो शादी का गाना, या फिर बर्थडे सॉन्ग है तो बर्थडे का सॉन्ग. जो डिपेंड अपॉन दी मूड भी होता है एक तरीके का. और इसको जो भी हो, बट राइटर को, लिरिक जो स्पीकर हैं, जो गाते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उन लोगों को मेन आइडिया हम लोगों को समझाना चाहिए कि वो किस बारे में ये सॉन्ग गा रहे हैं, या फिर उनकी इमोशंस बता रहे हैं, या फिर उनका मूड बता रहे हैं. सो डिपेंड्स, it should have some sense in such a way the reader or audience may know about the mood of the lyric poetry. Lyric speaker. Figure of speech. It may be imaginary language used by the poet. So imaginary language use करते हैं, जो भी हम चाहते हैं उसमें हम टोन डाल सकते हैं, खुशी का या गम का. So lyric poetry's attitude. So what are the attitudes of this lyric poetry? So lyric emotions, as I have already told you, lyric emotions. Poet's exterior reality, inspiration, song's language, and lyric apostrophe. So lyric poetry attitude कैसा होना चाहिए, उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए, वो अपने कौन से तरीक़े को इसमें डाल सकते हैं, या फिर उसको किस वजह से लिरिक लिखना पड़ रहा है, गाना पड़ रहा है. तो डेफिनेटली inspiration, reality inspiration. See, if you are seeing some picture, so it is a picture of a kind of jar here. So if you are seeing that picture, if you are inspired, अगर आपको वो देखकर बेहद पसंद आ जाता है, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम देखते बेहद पसंद आती है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं. So
वो चीज़ को हमें हर हालत में लेने की ख्वाहिश होती है. सो वेन एवर वी सी सम नेचुरल थिंग, जैसे कि हम फूल देखते हैं, बाग देखते हैं, बहुत से बड़ा माउंटेन देखते हैं, पानी देखते हैं, तो उसके तरीक़े को हम लोग इंजॉय करते हैं. उस इंजॉयनेस को इंस्पिरेशन कहते हैं. चाहत जिसके ऊपर अनकंडीशनली आ जाती है, दैट इज़ इंस्पिरेशन. सो poet exterior reality inspiration. So there is a picture of jar where you can see you can some emotion. So when now I'm seeing that jar, it looks so beautiful to me and I'm really enjoying the picture of that jar. So I can put this enjoyness into writing, enjoyness into the music. So I'm writing and I'm adding the music is lyric poetry. So lyric apostrophe. What can be a lyric? It between I and you. I am and you. So song language is depend upon the author's mood. So what may be the characteristic? So characteristic, it is not a story narration. कोई एक story नहीं है. Totally based on emotions. Brevity, variety, where the composition, poet's intention and free expression होता है. Emotive और aesthetic, it differs from the story. So it is not a story. ये एक story नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये ऐसी कहानी नहीं है जो किसी को बोल सकते हैं. ये एक ऐसी फीलिंग है जो बता सकते हैं. ठीक है. So who are the poets who belong to this lyric genre? So इस जब लिरिक आया तो कौन से राइटर ने लिरिक पोइट्री लिखी है? So 16th century William Shakespeare, Sir Philip Sidney. In 18th century William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats and Lord Byron. So in the 17th century, John Donne and John Milton. There are many writers. So I have already told you, whenever you came across this allied, that is literary forms and terms, definitely there are many writers will come under your study. You have to memorize, you have to keep it in your mind with that this or the writers come under lyric poetry. You can select 4 or 5 writers, it's more than enough, dears. So in the 16th century, William Shakespeare and Philip Sidney. 17th century, John Donne and John Milton. 18th century, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge. So Lord Byron. So here one of the lyrical poem. So She Walks in Beauty by George Gordon, that is Lord Byron. So you see Lord Byron name under 18th century. So it is an example of lyric. So whenever you see, whenever you read this poem, you have little bit kind of inspiration. See, she walks in beauty. So here the feelings and expression has been implemented in this poem. You read it once or twice, dears. So these are the feelings. So this picture shows definitely the feelings of a person. So again a small definition of lyric poetry. So till now I shown you the picture of the lyric poetry and how the picture speaks the feelings and emotions. Now we come to the total study part, that a lyric poem is generally short and expresses deep personal feelings, as I have already told you in the picture how the picture expresses the feelings. So lyric poems may be sung or accompanied by music but may not. So it can be sung or it can be given music. It depends upon the speaker's mood. This also I have told you already. So lyric oftenly refrain or a line or lines that repeated throughout the poem. So the lines can be repeated in the poem. So a small definition of lyric poetry is generally short and expresses deep personal feelings.
Lyric poems may be sung or accompanied by music, but may not. Lyric oftenly refrain or a line or a lines that are repeated throughout the poem. So, what has been said here? So, this is your definition here, you write it down. So, a lyric poem is generally short. So, I have already told you a short poem with deep expressions and feelings. It can be sung or it can be added, a music can be added to that poem, or it cannot be added. So, it depends upon the mood of the writer. So the line whatever you are writing in the lyric poetry, it can be in a single line, it can be repeated or it cannot be repeated. Everything depends upon the mood of the writer. So where it comes, the genre, the generation, the origin of lyric, so it is very very important part. Lyric comes from the Latin word lyricus, meaning of meaning is of or for the lyre. So this is a very very important part where you have to remember where from where we got this lyric. So लिरिक हमको कहाँ से मिला? अ लैटिन वर्ड है लिरिकस, लैटिन अ ग्रीक वर्ड है लिरिकस, मीनिंग फॉर द लायर. These short poems were originally accompanied by music. Thus I have already told you, mood can be a melodic or emotional हो सकता है. The writer can use the words which expresses his or her state of mind, perceptions, feelings rather than tell a story. So here the writer can express his own state of mind, how the mindset of writer was at the time whenever he came across something good or something bad, something enjoyable. And perceptions means understanding, something which makes him understand, he or she understand a particular thing, and he wants to write that particular lyric. And feelings rather than tell a story. So story बोलने से बेहतर है कि लिरिक पोएम ऐसे लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी स्टेट ऑफ माइंड, उसके माइंड में क्या चल रहा है, किसी को देखकर वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर किसी को देखकर वो समझते हैं और वो लिखना चाहते हैं. So some of the best example of lyric poetry comes from Italian and English sonnets. So many writers have given the example for this lyric poetry. So Go Lovely Rose, a name of the poem written by Edmund Waller. Edmund Waller is a writer who wrote Go Lovely Rose, a lyrical love poem in which the poet speaks to the rose he is sending to his love. So now the writer expresses his feelings, emotions. So now see, Edmund Waller was very much attracted towards the rose. So he has written this lyrical poem and he speaks to the rose that he sends to his lady love. So here Edmund Waller expresses his feeling to his lady love in a form of rose. So this is the example for lyric poetry. So Go Lovely Rose is the name of a poem written by Edmund Waller in which he expresses his love towards his lady love in the form of rose. He is sending a rose to his lady love. सो इसमें क्या बताया जा रहा है, एडमंड वेलर ने एक पोम लिखा है, उसका नाम गो लवली रोज़ है, जिसमें उन्होंने अपनी लेडी लव को अपनी फीलिंग्स बताई है एक रोज़ के ज़रिए. ठीक है. नेक्स्ट कम्स जेम्स डीफोर्ड, अनदर poet. Many lyric poems are about love, although they can about anything which stirs the emotion. Italian sonnet by James Defoe is a good depiction of this. So what
जेम्स डी फोर्ड से हमेशा लव के बारे में ही बोलना ज़रूरी नहीं है. वी कैन से रैदर देन लव. सो इमोशंस को बताना लव के ज़रिए से ही ज़रूरी नहीं है, हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको बता सकते हैं. So Emily Dickinson, and another poet who wrote about lyric poem written by Emily Dickinson. The title of the poem is "I Felt a Funeral in My Brain." Painfully, it describes a person who is going insane, or at least thinks they are. So नाउ इमिली डिकिंसन एक्सप्रेसेस अबाउट दी सैडनेस. सो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें पेन बताया गया है. सो वी सा सी एडमंड वालर रोज़ के ज़रिए अपनी चाहत का इजहार कर रहे हैं. जेम्स डी फोर्ड कोई भी इमोशंस रख सकते हैं, लव ही ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहा है. सो हियर द इमिली डिकिंसन शोज pain in the lyric poem. So, as I have already told you, lyric poetry, a formal type of poetry, expresses poets' emotions, feelings, not equivalent term device. Ancient Greek से आया है, defined as about it can be about emotions, it can be about personal emotions, depend upon the mindset and everything. So the important literary theory to the division was developed by Aristotle. So he defined the lyric poetry into three types, that is, it can be lyrical, it can be dramatic, and it can be an epic. So the most important characteristics of lyric poetry. So what are the characteristics? So in this, the poem conveys the ideas and feelings is one character. So it can be a beyond to the mind of the writer. So Herbert Read, a lyric poet, said the poetry is characterized by sense, sound, and suggestion. So something extra that touches or moves us. So according to Herbert Read, what he said regarding lyric poetry is it is totally depend upon the sense, that is meaning. It can be a sound and suggestions. I think prose as dimensional writing, with one dimension can be a sense and the next can be a meaning. इसमें sense भी बोल सकते हैं और उसको उसकी meaning भी बयान कर सकते हैं. So sense, sound and suggestion can be the characteristic of poetry. So as I have already told you, this lyrical poetry. Here you see kinds of lyrics. What are the kinds of lyrics now? So R.G. Rees. So R.G. Rees, a lyric poet, classifies lyrics into four kinds. So what are the four kinds? They are direct, intellectual, formal and musical. So the R.J. Rees classification of lyrics, what is an important 2 mark dears? R.J. Rees, underline it in your note or write it down in the note. What how R.J. Rees classified, how R.J. Rees classifies lyrics, or define lyric according to R.J. Rees, whatever the question may be. So R.J. Rees classifies lyrics into four kinds. They are direct, intellectual, formal and musical. So डायरेक्ट भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन द इंटेलिजेंस हो सकता है, नॉलेज हो सकता है. एक फॉर्मल हो सकता है, जैसे कि हम लोग फॉर्मल पार्टीज़ होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं. और म्यूज़िकल हो सकता है बेस्ड अपॉन द फीलिंग्स आई सेड. So next writer comes Wordsworth. Wordsworth wrote Rainbow as a direct type of lyric. It expresses poets' experience of joy in a short and simple form. So how the direct type of lyric can be explained.
सो डायरेक्ट टाइप ऑफ लिरिक क्या होता है? सो नाउ वी सॉ दैट आरजे रीस ने लिरिक को 4 तरीके से बताया है. सो वो क्या है? डायरेक्ट है, इंटेलेक्चुअल है, फॉर्मल और म्यूजिकल है. सो वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम रेनबो में डायरेक्ट टाइप ऑफ लिरिक कैसा होता है वो बताया है. सो व्हाट इज द डायरेक्ट टाइप ऑफ लिरिक मीन्स? इट एक्सप्रेसेस पोएट्स ओन एक्सपीरियंस ऑफ जॉय. सो वो अपने खुद की इंजॉयनेस जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो कहीं उन्हें नेचर दिखा है, जैसे कि फूल देखे हैं, पहाड़ देखे हैं, पानी देखा है. सो वर्ड्सवर्थ इज़ ए नेचर पोएट. सो उनकी पोएम रेनबो में उन्होंने डायरेक्ट टाइप ऑफ लिरिक कैसा होता है बताया है. सो डायरेक्ट टाइप ऑफ लिरिक क्या होता है? पोएट्स का खुद का एक्सपीरियंस होता है. वो पोएट्स एक्सपीरियंस ऑफ जॉय इन अ शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में इन्होंने लिखा है. The intellectual or reflective type of lyric is the metaphysical poem. Metaphysical poem, that is John Donne's poem, will fall into this category. So John Donne ने intellectual and reflective type of lyric लिखा है. उसके लिखने वाले जॉन डन हैं. John Masefield poems and most of Hopkins' poetry are lyrical. They are musical too. John Masefield एंड हॉपकिंस ने जो पोइट्री लिखी है वो एकदम से लिरिकल है और उसमें म्यूज़िक एडेड है. सो नेक्स्ट कम द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिरिक. द लिरिक प्रॉपर मे बी सेड टू हैव 3 पार्ट्स. द प्रोपोर्शन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, जो पहले बोला है मैंने, एंड थॉट्स आर सजेस्टेड बाय इमोशंस. उसको सजेशन, इमोशन ही एक सजेशन हो सकता है. अ लार्ज पार्ट of poem is devoted to a series of reflections on the emotions and experience expressed in the beginning. So return to the original mood. So it can be depend upon the mood. So the poem returns to the original tone. इसमें जो मूड के डिपेंड होकर लिखे हैं, मूड को अपने दिमाग में रख के लिखे हैं, वो पोएट का नाम है हेरिक्स लिरिक. उन्होंने अपने पोएम लिरिकल पोएम द ब्लॉसम्स में परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है. फेयर प्लेज ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, वाई डू यू फेड सो फास्ट. सो ओरिजिनल टोन बताई है, इसमें इन्होंने परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है. सो इसमें एक फिलोसॉफिकल कंक्लूशन भी दिया है. सो आई रिपीट यू अगेन द काइंड्स ऑफ लिरिक्स में R.G. Rees classified into 4 kinds: direct, intellectual, formal and musical. So direct type of lyric has been showed by Wordsworth in his poem Rainbow, that it has been expressed the poet's own experience of joy in a short and simple form. So intellectual or reflective is a type of metaphysical poem. उसके राइटर हैं जॉन डन एंड जॉन मैसीफील्ड. एंड मोस्ट ऑफ द हॉपकिंस पोइट्री को उन्होंने म्यूज़िकल, जो फॉर्मल भी हैं और म्यूज़िकल भी होते हैं. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड्स ऑफ लिरिक्स. सो स्ट्रक्चर में बताया गया है कि थॉट एंड इमोशंस इन द फर्स्ट स्टैंजा कैन बी सजेशंस होता है. थॉट्स एंड इमोशंस, सजेशंस, experience based upon the mood the lyric poetry can be written. So उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेरिक्स लिरिक. the name of the lyrical poem is the blossom. so perfect example है उसका. Now comes the chief qualities of lyric. What are the chief qualities of lyric now? So it is a short poem. वो बहुत छोटा सा poem है. इसमें simplicity in language and treatment. So इसमें simplicity होती है, simple तरीके से लिखता है so that the reader can enjoy the reading. It deals with a single emotions which is generally stated in the opening of few lines. So single emotions होता है, then thoughts होते हैं, suggestions होता है, and concluding part में जो होता है वो summary होती है and conclusion reached by the poet. So
I think you people understood. See, the chief qualities of lyric here is characterize simple language. It should have simple language written in a short form. Short poem होता है. Definitely it deals with emotions, suggestions, thoughts and conclusion and by the poet. So it can be a musical. वर्बल म्यूज़िकल होता है. वर्बल जो होता है जो बोलते हैं, जो हम आवाज़ से बताते हैं. सो इसमें अपील एंड चार्म जो कि बहुत प्यारा होता है. सो वेरियस डिवाइसेस आर यूज्ड बाय पोएट्स टू एनहांस द म्यूज़िक ऑफ देयर लिरिक्स. सो वेरियस डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि गिटार, जैसे कि पियानो, जैसे कि ड्रम बीट्स. सो इट डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द पोएट. So a lyric is always an expression of moods and emotions. So expresses merely emotions. It can be intellectual, it can be musical, it can be emotional, it can be formal. So we saw what we saw now. A small recap for you. We saw about the definition of lyric. I shown you many pictures so that you can people know what is lyric there, what is the type lyric कैसे होता है. So कैसे अपनी feelings को, emotions को बयान करते हैं, अपने ideas को बोलते हैं. So many writers shown their ideas regarding the lyric. R.J. Rees 4 kind में डिवाइड किया है कैटेगरीज में, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड म्यूज़िकल को इम्पोर्टेंस दिया है, और उसको रख के वर्ड्सवर्थ, मैसी फील्ड्स, जॉन डन, बहुत सारे पोएट ने लिरिकल पोएट्री लिखी है. So I think you people understood. If you have any doubt, you feel free to ask me, dears. Till that, stay blessed, stay safe, take care. Allah Hafiz. See you tomorrow, inshallah.